शामली नगर के संयुक्त जिला चिकित्सालय के बाहर लगभग 1 वर्ष से अस्पताल में ही मोबिन नामक एवं कर्मचारी ने एक दुकान बनाकर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिस संबंध में कुछ दिन पूर्व राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष मिथुन सरोहा अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला अस्पताल में पहुंचे। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष मिथुन सिरोहा ने स्वयं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पहुंचकर कब्जा हटवाने के लिए कहा। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष मिथुन सिरोही को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 8 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसको लेकर चिकित्सा अधीक्षक मोबिन को नोटिस जारी कर कब्जा हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद कल दिनांक 30/8/2024 को अस्पताल प्रशासन ने उक्त भूमि को पूरी तरह से कब्जा मुक्त करा दिया। अभय कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आज सावली और डेसर तालुका प्राथमिक शिक्षकों क्रेडिट सोसायटी 66મી वार्षिक साधारण सभा राखवामां आवी हती। आ वार्षिक साधारण सभानी अंदर समग्र वर्ष दरमियान जे नाणाकीय लेवड़ देवड़ थती होय छे एनुं तारीख सर्वैयु मान्य मंत्रीश्रीओ द्वारा सभासदों समक्ष मूकवामां आवतुं होय छे। समग्र वर्ष दरमियान जे कंई पण मंडळीनो जे वहीवट थतो होय छे ए सभासदों पर पहोंचाडी અને મંડળીની અંદર વિશ્વાસ સંપાદન કરવા માટેનું કામ વ્યવસ્થાપક મંડળ અને મંડળીના મંત્રીઓ દ્વારા કરવામાં આવતું હોય છે। અમારા શિક્ષક મિત્રોના દર વર્ષે જે ધોરણ 10 અને 12ની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ હોય છે એમનું પણ સન્માન કરવામાં આવતું હોય છે, નિવૃત્ત શિક્ષકોનું પણ સન્માન કરવામાં આવતું હોય છે, પણ પૂરની પરિસ્થિતિને કારણે એ કાર્યક્રમ અમે થોડા સમય પછી રાખવાના છે। ત્યારે આપણે જોયું હશે કે સભાસદોની અંદર જે અમે આર્થિક મદદ કરી અને એના પરિવારને અને બીજા પ્રસંગોની અંદર અમારી મંડળી મદદરૂપ થતી હોય છે, ત્યારે ઉત્તર આ મંડળી અમારી પ્રગતિ કરી રહી છે। એ માટે સૌ સભાસદ મિત્રો અને બધાની સમગ્ર ટીમ કામ કરી રહી છે।